चालू হয়েছে লাইভ start. Hello student, myself Arup Mukherjee, one of the math educator on behalf of BookmarksEducare. Welcome to all of you again. Now let's start our last session of definite integral, and this is the last class through which I will discuss all about definite integrals. Okay, so this is our formulas. Formula means property of definite integrals. Using these properties of definite integrals, we will solve the problem based on definite integral. Okay, so before starting our class, I want to say that we have already been started our Dhurandhar session. Okay, and from very few days ago we have started also questions answer session. Okay, so the WhatsApp number through which you will send your query regarding maths, physics, chemistry, biology, so that is already provided in our this contact number. Okay, this contact number, this is the WhatsApp number. You can send your query which belongs to math. That might be maths questions, might be physics questions, might be biology questions. So all the questions you can send through WhatsApp numbers. This is the WhatsApp numbers. Okay, and don't be late and keep yourself updated through our YouTube channel. This is our YouTube channel, and through our Facebook link as well as Instagram link. So stay tuned with us through YouTube channel such that you can get lots of educational videos regarding physics, chemistry and maths. So now I'm going into our chapter, means our today's topic, which is based on definite integration. So I have already said you that these are all properties of definite integral. Okay, so if integral a to b, here lower limit is a, upper limit is b. If integral a to b f of x dx, then f of b minus f of a. This is the fundamental theorem of calculus. These are all properties, and this is the name of properties name. First property is, if a to b, integral of a to b f of x dx, then a to b f of t dt. You can change the variable, okay, but limit will be remain constant. Second, if you interchange the limits, then the sign will be changed of the integral. Identical limits, if a to a, अगर
लिमिट सेम होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। if limit integral of limit a to b k into f of x dx, then constant will be coming out the integral portion. So like this, limit integral of limit a to b f of x plus minus g of x dx, then you can split the integrand part into like this. This is splitting the interval. If c greater than a lesser than b, then let us take c any values which lies between a to b. a means lower limit, b means यहाँ पर upper limit. So we can split into this integrand part along with limits like this. Okay, so now King's property, a to b f of x dx, then a to b integral of a to b f of upper limit plus lower limit minus x dx. You can replace x by a plus b minus x. Okay, 0 to a f of x dx, then you can write 0 to a f of a minus x dx. So this is known as FTC, which I have already discussed in our previous class. So these are all properties of definite integral. So now let's start with first question based on definite integral. So here, if y is equal to 0 to x, integral of 0 to x, t minus 1 into t minus 2 whole square dt, find x for which dy by dx is equal to 0. Now, using FTC means fundamental theorem of calculus, that is, if f of x is equal to integral of 0 to x f of t dt, then f dash x is equal to f of x. This is known as fundamental theorem of calculus. So now, using this fundamental theorem of calculus, in this sum, what we can get, first of all, I copy the sum. So differentiating on both sides with respect to x, so ddx of y is equal to ddx of this portion 0 to x t minus 1 into t minus 2 whole square dt. So ddx of y means dy by dx, and over here we apply the FTC means fundamental theorem of calculus, then x minus 1 x minus 2 whole square. Result of this portion is this, using FTC means fundamental theorem of calculus. So for which value of x we will get dy, the value of dy by dx is equal to 0. So we have to put 0 instead of dy by dx so that we can get the value of
x. So x minus 1 into x minus 2 whole square is equal to 0. So either x is equal to 1 or x is equal to 2. For x is equal to 1 or x is equal to 2, dy by dx will be 0. Okay. Now we are going to the next sum. This is also based on FTC on definite integral. Okay. So the sum is this: 0 to y e to the power t dt plus integral of 0 to x cos of t square dt is equal to 0. So differentiating on both sides with respect to x, then what we will get? ddx of, mind it, with respect to x. We have to differentiate on both sides with respect to x. Okay. So 0 to y e to the power t dt plus ddx of integral of 0 to x cos of t square dt. ddx of 0 मीन्स 0 ही होगा क्योंकि 0 कांस्टेंट है. सो यूजिंग FTC, सो क्या होगा? e टू द पावर y, क्योंकि यहाँ पर y है सो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई का. हो गया. प्लस cos of x square is equal to 0. So now e to the power y ddx of y means dy by dx plus cos of x square. So this is the answer. We have to show that this. So we got the answer, desirable answer. So this is the answer proved. Okay. Please, the sum which I am going to solve for you, please copy the sum or save this video for your interest. If you copy this sum or record these videos which I am going to show you or solve for you, that will help you in future for the coming board exam as well as competitive exam. Okay. So now next sum is also based on FTC. So let integral of f of t dt is equal to f of phi of t, where phi dot t is equal to f of t. We just assume. Okay. So now g of x is equal to integral of limit 0 to x f of t dt by x. So phi of t so putting upper limit instead of t,
x minus putting lower limit instead of t0. So taking limits x टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पर x टेंस टू 0 दिया हुआ है, इसलिए टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड x टेंस टू 0, we get limit x tends to 0 g of x is equal to limit x tends to 0 phi of x minus phi of 0 by x. So x can be written as limit x tends to 0 phi of x minus phi of 0 by x minus 0. This is the first principle of differentiation. So instead of this we can write f dash phi dash x, sorry, phi dash 0. Clear? So phi dash 0. So now if we put 0 instead of t over here, what we will be getting? We will get phi dash 0 is equal to f dash 0. So phi dash 0 means f of 0. So the answer of, we have to show that limit x tends to 0 g of x is equal to f of 0. So hence it is proved. So it is proved that limit x tends to 0 g of x is equal to f of 0. Okay. So now we are coming to the next sum, that is given as integral minus 1 to 1 mod of 1 minus x dx. Okay, and this is the sum which is based on MCQ type. This is MCQ type sum. So first of all, what we know, the range is x greater than equal minus 1 and lesser than equal 1. So implies that 1 greater than equal x. Okay, so 1 minus x greater than equal 0. Clear? So mod of 1 minus x is equal to 1 minus x, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा when 1 greater than x होगा. ठीक है, सो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है. सो नाउ I is equal to minus 1 to 1 mod of 1 minus x dx. So minus 1 to 1 1 minus x dx. So now x minus x square by 2 integration of 1 dx मतलब x minus integral of x dx means x square by 2. So 1 to minus 1. Now putting upper limit and lower limit. So putting upper limit, instead of x 1 minus 1 by 2 minus putting lower limit minus 1 minus 1 whole square means 1 by 2. So 1 minus half, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हाफ, तो हाफ हाफ एलिमिनेट हो जाएगा. सो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस question. So the right choice is C. Okay, so the next sum is
0 to pi by 2 integral 0 to pi by 0 to pi, the integrand part is dx by 1 minus 2a cos x plus a square, so is equal to this. So we have to show that integral 0 to pi dx by 1 minus 2a cos x plus a square is equal to pi by 1 minus a square, where a less than 1. So let I is equal to 0 to pi. First of all, I copy the sum, that is this. So now taking 1 and a square together, dx 1 plus a square minus 2a cos x 0 to pi 1 प्लस ए स्क्वायर, मतलब इंटू 1 हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई चेंज, एनी चेंज वी विल नॉट बी एबल टू गेट इन द सम. ओके, सो व्हाई आई एम पुटिंग 1 एज मल्टीपल फॉर्म, क्योंकि इंस्टेड ऑफ 1 I will put sin squared x by 2 plus cos square x by 2 to make the sum easy. So sin square x by 2 plus cos square x by 2, okay, minus 2a cos x की जगह पे हम लोग सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला डाल देंगे, which is cos x means which is cos square x by 2 minus sin square x by 2. Okay, so now simplifying this portion, what we will get, 0 to pi dx, साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर x by 2 कॉमन ले लेते हैं, सो क्या रह जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, ओके, प्लस 2a, उसके बाद प्लस cos स्क्वायर x by 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ओके, सो 0 to pi, ऊपर नीच साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीच cos स्क्वायर x by 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x by 2. So dx by cos स्क्वायर x by 2 मतलब sec स्क्वायर x by 2 dx, यहाँ पर 10 हो जाएगा. सो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा. सो क्या होगा 1 प्लस a होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10 स्क्वायर x by 2, ओके, प्लस ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा. सो 1 माइनस a होल स्क्वायर cos square x by 2 by cos square x by 2 मतलब 1 हो गया. ओके, सो नाउ इंटीग्रल 0 to pi नीचे से a प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. सो
1/1 प्लस ए होल स्क्वायर, हम लोग कॉमन ले लिया नीचे से, सो क्या रह जाएगा 1 प्लस ए बाई 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 10x/2 होल स्क्वायर, ऊपर रह जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। ओके, सो नाउ यहां पर एक हाफ एडजस्ट कर देते हैं, ले लेते हैं, सो इसीलिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों किया? क्योंकि tan ऑफ x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x/2 का डिफरेंशिएशन होता है ddx ऑफ tan x/2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ, अप्लाइंग चेन रूल इन इट। ओके, सो इसीलिए हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट यहां पर किया है। ठीक है, सो 2/1 प्लस ए होल स्क्वायर 0 to पाई, यहां पर d ऑफ tan x/2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहां से d ऑफ tan x/2 का मतलब क्या होता है? sec हाफ इंटू sec स्क्वायर x/2 dx। सो इंस्टेड ऑफ हाफ इंटू sec स्क्वायर x/2 dx we can put d of tan x/2, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे जो है वही रह जाएगा, 1 माइनस ए बाई 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ये इनडिफिनिट इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, वो यहां पर डाल देंगे। ठीक है, सो I is equal to 2/1 प्लस a होल स्क्वायर 1/a, a का मतलब 1 माइनस a बाई 1 प्लस a इंटू tan इनवर्स x बाई a मतलब 1 प्लस a बाई 1 माइनस a हो जाएगा, इंटू x का मतलब tan ऑफ x/2। सो अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0। सो नाउ putting upper limit and lower limit in this expression we will get, so यहाँ पर 1 प्लस a का एलिमिनेट हो जाएगा एक, सो 1/1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये tan इनवर्स 1 प्लस a बाई 1 माइनस a इंटू tan π/2 tan 90 डिग्री, सो π/2, ठीक है, माइनस 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, तो एंटायर पोर्शन विल बी 0, सो tan इनवर्स 0, tan π/2 मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू समथिंग मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, सो 2/1 माइनस ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स इंफिनिटी, ये वाला इंफिनिटी हो जाएगा,
क्योंकि tan पाई बाई 2 मतलब इन्फिनिटी, उसका वैल्यू tan पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। सो इन्फिनिटी इंटू एनी नंबर इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। और tan इनवर्स 0 मतलब 0, क्लियर। सो नाउ 2 by 1 minus a square, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई 2, so 2 will be cancelled out from numerator and denominator, so the result is pi by 1 minus a square. So hence the portion, the given question is proved. Okay, another next sum, another sum, that is, oh, before going to next sum, which we have said already on the beginning of our class, that is, we have already, Dhurandhar series has already been started a few days ago, and we also started question answer series. So if you have any doubts on maths, on physics, on chemistry, or on biology, please send your queries or questions to our WhatsApp number. So if you send your queries through this WhatsApp number, we will send your answer within 20 minutes. Okay, so this is a big opportunity for all of you. Don't be late. Please send your queries to this number, to this WhatsApp number. Don't call, just WhatsApp this number. Through this number, you will as soon as possible get your answer through this WhatsApp number. Okay, so now the next sum is I is equal to integral of lower limit pi by 6 to upper limit pi by 3 1 plus root over of tan x. First of all, I split root over tan of x into root over sin x by root over cos x. So multiplying numerator and denominator by root over of cos x. So if we multiply numerator and denominator by root over of cos x, then we will get root over of cos x dx by root over of cos x plus root over of sin x. So now we will apply the properties of definite integral over here. So which formula we will going to apply? 0 to a f of x is equal to 0 to a f of upper limit minus x dx. Okay, so I is equal to, sorry, this property will not be used over here. We will use 0 a to b f of x dx is equal to a to b f of upper limit plus lower limit minus x dx. Okay, this formula will, these properties will be used over here. So pi by 6 to pi by 3 cos of pi by 3 plus pi by 6 minus x cos of
pi by 3 plus pi by 6 minus x plus root over of sine of pi by 3 plus pi by 6 minus x. So to dx pi by 6 to pi by 3, pi by 3 plus pi by 6 means pi by 2. So root over of cos pi by 2 minus x by cos of root over of cos of pi by 2 minus x plus root over of sine pi by 2 minus x dx. So pi by 6 to pi by 3, cos of pi by 2 minus x means sine of x by sine of x cos of x, okay, dx. So this is also I, okay. So इसको 1 नंबर इक्वेशन दे देते हैं, इसको 2 नंबर इक्वेशन दे देते हैं. एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, what we will get? I plus I pi by 6 to pi by 3 cos x, एलसीएम यही होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम root over of cos x plus root over of sin x. So root over of cos x plus root over of sin x will be wiped out from numerator and denominator, means eliminated, will be eliminated from numerator and denominator both. So pi by 6 to pi by 3 dx, okay, ये हो जाएगा. Now now 2i is equal to pi by 6 to pi by 3 dx is equal to integral of dx means x pi by 3 by pi by 6 is equal to upper limit pi by 3 minus lower limit pi by 6. So 6 हो जाएगा एलसीएम minus pi, so pi by 6. So I is equal to 2 इधर आ जाएगा, so divide हो जाएगा pi by 12. So pi by 12 is the required answer of this sum. So pi by 12 इसका आंसर हो जाएगा. Clear? So got it? Now we move to the next sum. This sum is very tricky sum. So let I is equal to 0 to 100 pi sigma r is equal to 1 to 10 tan of r into x dx. So we have to split this integrand part. So 0 to 100 pi
tan x. First of all, you have to put 1 instead of r, after that 2, and after that 3, and after that, and those integrand part will be added with plus sign. So tan x, tan 2x plus tan 3x, and it's going on to tan of 10x, okay, dx. Clear? So now here 0 to n into t f of x dx is equal to n into 0 to t f of x dx if f of t plus x is equal to f of x. This is also the property. If where f of x is a periodic function with least period t, t मतलब पाई, यहाँ पर least period पाई. So देखो f of पाई least period t मतलब पाई है यहाँ पर least period. So पाई प्लस x मतलब क्या होगा, tan of कोई भी एक फंक्शन ले लो, फर्स्ट ऑफ tan x ही ले लो. So instead of x you have to put pi plus x, that is meant tan x. Okay, अगर तुम tan of 2x लोगे तो 2 पाई प्लस 2x हो जाएगा. इसका मतलब देखो यहाँ पर 2 पाई का मतलब 2 इंटू 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स. तो 1 2 3 4 प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो वो भी tan x ही हो जाएगा. अगर तुम tan ऑफ 3 पाई प्लस 3x लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 मतलब 6 इंटू पाई बाई 2, ऐसे इसको स्प्लिट कर सकते हो, प्लस 3x. सो 1 2 3 4 5 6 प्लस 3x मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है. तो लेकिन यहाँ पर तो tan ही है तो पॉजिटिव हो गया, tan tan ही रहेगा क्योंकि 6 इवन मल्टीपल है इसीलिए. सो नो चेंज विल बी ऑकर्ड ओवर हियर. सो tan 3x हो जाएगा. क्लियर? सो applying this property over here, what we will get? I is equal to pi 100 into 0 to pi tan x प्लस tan 2x, ऐसे करके tan 10x तक होगा. Clear? Into dx. Now another property will be used over here, that is this formula 0 to a f of x dx. this property अगर ऐसे रहेगा तो 0 to a f of अपर लिमिट माइनस x dx हो जाएगा. सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला होगा, ये वाला प्रॉपर्टी f of पाई a माइनस एक्स इज इक्वल अगर माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी. अगर यहाँ पर देखो पाई अपर लिमिट माइनस एक्स, सो tan ऑफ कोई भी एक फंक्शन ले लो, tan पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही हो जाएगा tan एक्स. अगर तुम ये वाला ले लो 2 पाई माइनस एक्स, फिर भी तुम देखो, सॉरी यहाँ पर तो ही रह जाएगा, ये वाला ले लो. अगर ये वाला फंक्शन ले लोगे तो क्या होगा, देखो 2 पाई माइनस 2x, कौन सा क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, 4 में अटका हुआ है, तो 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है.
तो नेगेटिव हो जाएगा, 10 है, और 4 इंटू मतलब 4 इंटू पाई बाई 2, 4 तो इवन मल्टीपल है इसीलिए चेंज नहीं होगा, 10 ही रह जाएगा। सो 10 to x, सो ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, -100 सॉरी स्प्लिट करके लिख देता हूं, देखो, सो 100 0 to पाई -10x -10 to x माइनस डॉट 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 -10 of 10x dx। ओके, सो माइनस कॉमन ले लो, 0 to पाई 10x प्लस 10 2x प्लस डॉट 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 10x हो जाएगा dx। इसका मतलब i होगा, सो -100i, क्लियर। सो i इज इक्वल टू -100i, सो इधर ले आओगे तो 101 हो जाएगा, 101i इज इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू 0 बाई 101 मीन्स 0 ही होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर एक तो ऑप्शन देना भूल गए थे, t इज इक्वल टू 0। ओके, सो डी पोर्शन 0 होगा, सो डी होगा इसका राइट चॉइस, क्लियर। सो द नेक्स्ट सम, is this -1 to 4 f of x dx is equal to 4 दिया हुआ है, एंड 2 to 4 थर्ड ब्रैकेट 3 माइनस f of x dx is equal to 7 दिया हुआ है। सो इसका वैल्यू निकलने के लिए बोला गया है हम लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 to 4 3 minus f of x dx is equal to 7। सो स्प्लिट कर लेते हैं, 3 dx 2 to 4 प्लस 2 to 4 f of x dx is equal to 7। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू x प्लस 2 to 4 f of x dx is equal to 7। So 3 into 4 minus 2 plus 2 to 4 f of x dx is equal to 7। So 3 into 2 ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 to 4 f of x dx is equal to 7। So 2 to 4 इंटीग्रल 2 to 4 f of x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6, सो 1, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। सो नाउ let's start the sum. First of all, we have found out the value of this portion. Now -1 to 4 f of x dx can be written as 2 to 4 f of x dx, sorry, लोअर लिमिट माइनस है तो -1 to 2 ले लेता हूं क्योंकि यहां पर 2 है। सो और 2
lies between -1 to 4. That is why we are taking 2, okay, as a value, desirable value between -1 to 4, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 2 दिया हुआ गया है, इसीलिए. सो f of x dx प्लस 2 to 4, इसको क्योंकि x greater than -1 less than 4, so I can 2 also lies between them. Okay, so that is why ऐसे करके इसको स्प्लिट कर लेते हैं. एंड ओके, सो ये हो गया. सो f of x dx, सो इसका वैल्यू 4 है. ओके, यहाँ पर दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है. सो ये वैसा जो है वैसे ही लिख देते हैं, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, सो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा. ठीक है. सो ठीक है, फिर और एक बार कर लेता हूँ इसको. 6 आएगा, देख लेता हूँ और एक बार यहाँ पर, और एक बार इसको कर लेता हूँ. 3 into 2 to 4 dx minus 2 to 4 f of x dx is equal to 7. ओके, सो ये वाला 3 इंटू ये वाला क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन इसका 4 to 2 माइनस 2 to 4 f of x dx is equal to 7. सो 3 इंटू 2 हो जाएगा ये अपर लिमिट -2 माइनस 2 to is equal to 7. सो f of -1 होगा, सॉरी वहां पर तो मिस्टेक हो गया था. ठीक है. सो f of x dx is equal to -1 हो जाएगा. सो ये वाला -1 हो जाएगा. ओके, सो -1 to 2 f of x dx is equal to 5 इधर आएगा तो. सो अगर यहाँ पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, a to b f of x dx, देन माइनस आ जाएगा अगर हम लोग अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ले आएंगे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ले जाएंगे तो ही साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस साइन सामने आ जाएगा. ठीक है. सो b टू a हो गए, अगर होगा तो तब जाके माइनस साइन आ जाएगा. ये प्रॉपर्टी है किसका, ना डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है. ठीक है. सो माइनस 2 to -1, क्योंकि यहाँ पर लिमिट चेंज हुआ है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा. सो f of x dx is equal to 5. सो 2 to -1 f of x multiplying on both sides by -1, so we get -5. so -5 is the required answer. इसका आंसर होगा -5. क्लियर. Now the next sum is
थर्ड ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो थर्ड ब्रैकेट एक्स का मतलब x is the greatest integer not exceeding x। क्लियर? x का वैल्यू x से ज्यादा नहीं होगा, नियरेस्ट इंटीजर होगा। सो थर्ड ब्रैकेट ऑफ x का मतलब greatest integer of x not exceeding x। ओके, सो यहां पर मॉड ऑफ एक्स, सॉरी, थर्ड ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 2 3। 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 से माइनस x ग्रेटर देन 1 लेसर देन √2, लेसर देन √2 x का वैल्यू, सो x greater than √2 लेसर देन √3 and lesser than √3 x greater than √3 लेसर देन 2। सो अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। क्लियर? सो व्हेन x ग्रेटर देन 1 लेस देन √2, सो थर्ड ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? x1 होगा। व्हेन x ग्रेटर देन √2 लेस देन √3, देन थर्ड ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? 2 हो जाएगा। एंड व्हेन x greater than √3 less than 2, then x square third bracket of x square means 3 हो जाएगा। So now I is equal to, we have to split this interval into this interval। So 1 to √2 third bracket of x square dx plus √2 to lower limit √2 to √3 third bracket x square plus √3 to 2 third bracket x square dx। so 1 to √2 इस इंटरवल में थर्ड ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? 1 इंटू डी एक्स 1 प्लस √2 टू √3 इस इंटरवल में थर्ड ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? 2 होगा, 2 इंटू डी एक्स प्लस √3 टू 2 इस इंटरवल में थर्ड ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? सो इंटीग्रल ऑफ dx मतलब x √2 1 to √2 प्लस इंटीग्रल ऑफ ये 2x हो जाएगा प्लस ये 3x हो जाएगा। सो अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें डाल देंगे। सो √2 - 1 प्लस 2 √3 minus 2 √2 plus 6 minus 3 √3। So √2 minus 1 plus 2 √3 minus 2 √2 plus 6 minus 3 √3। So क्या हो जाएगा? √2 minus 2 √2, so minus √2 हो जाएगा। क्लियर?
-1 + 6 मतलब +5 हो जाएगा, और ये +√2 + 2√3 -3√3 मतलब √3 हो जाएगा। ठीक है, सो रिक्वायर्ड आंसर इज 5 - √3 - √2. This is the required answer. Clear? Now today's last sum is this. Important sum it is also. So let I is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta. So यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of अपर लिमिट माइनस x dx. ओके, सो कर देते हैं लिमिट, जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. सो 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus tan of पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा. ओके, अब tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें डाल देना पड़ेगा. सो क्या होगा, 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus tan पाई बाई 4 tan a माइनस tan b मतलब tan थीटा बाई 1 plus tan a into tan b tan पाई बाई 4 into tan theta d theta. So 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 minus tan pi by 4 का मतलब 1 होता है, tan pi by 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 minus tan theta by 1 plus tan theta into d theta. So 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta by एलसीएम कर देता हूं. तो एलसीएम करने के बाद क्या होगा, 1 और 1 प्लस tan थीटा का एलसीएम होगा 1 प्लस tan थीटा ही होगा. सो 1 प्लस tan थीटा d theta. So tan theta will be eliminated. 0 to pi by 4 log of 2 by 1 plus 1 मतलब 2 by 1 plus tan theta d theta. Okay, so I is equal to log of a by का log of a by b का फॉर्मूला क्या है, log a माइनस log b. सो यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो इम्प्लाई करने के बाद क्या होगा, log 2 माइनस log of 1 plus tan theta. ओके, d theta. क्लियर? सो नाउ इसको स्प्लिट कर देना पड़ेगा. स्प्लिट कर दो. स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, log 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा. सो 0 to pi by 4 d theta माइनस इंटीग्रल 0 to pi by 4 log of 1 plus
tan थीटा d थीटा। सो इसका मतलब I, क्योंकि I मतलब I किसको पकड़ लिए थे, इसको पकड़े थे, तो इसकी जगह पे I बैठाना पड़ेगा। सो इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 2 तो कांस्टेंट ही है, तो इंटीग्रल ऑफ डी थीटा मतलब थीटा हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाना पड़ेगा, और इसका जगह पे I बैठा दिया। ठीक है, सो I इधर ले जाएंगे तो 2I हो जाएगा, log 2 इंटू पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है। सो 2I इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4। क्लियर? सो द रिक्वायर्ड आंसर इज, I का आंसर क्या हो जाएगा, log 2 इंटू पाई बाई 8। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका आंसर क्या होगा, log 2 इंटू पाई बाई 8। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल। और इसके साथ हम लोग पूरा इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म कर लिए। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल एज वेल एज इंडेफिनिट इंटीग्रल दोनों ही हम लोग खत्म कर चुके हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बता देंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हम लोगों का, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के थ्रू से हम लोग बता देंगे। ठीक है, फॉलो करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड विथ अस, ओके, थ्रू यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम लिंक। ओके, so such that our updated information you will get easily. So these are all vital information which I already said to all of you. Please note down these numbers, WhatsApp numbers, means contact numbers, through which you can send us your queries on various chapters, means biology, chemistry, physics and math also. And this is our website page, okay, and this is our YouTube link. So stay tuned with our YouTube link such that you will be able to get our new videos based on mathematics, physics, chemistry and biology. And this is our Facebook link and Instagram link, okay, through which you will get to know when we will teach the chapter from which subject, that will be also discussed through, that will be also given, that in particular, that those information will be given, will be provided on our Facebook link, Facebook page as well as Instagram page. ठीक है, सो ये वाला नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और आपका जो जो प्रॉब्लम होगा फिजिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, मैथ के ऊपर और बायोलॉजी के ऊपर, तुरंत हम लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर में वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके भेज देना। हम लोग एज एन एज पॉसिबल, जितना तुरंत हो सके, हम लोग उसका आंसर आप लोगों को भेज देंगे थ्रू दिस कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो डोंट बी लेट, हरी।